already I have told you in many video. Even I have made you understand in many video that if you are studying grammar only, it is not enough for you to become an English speaker. Uh, you will have to do the practice a lot. Suppose कुछ भी पढ़ते हो anything you study in grammar, the use of have to, has to, use of tenses, the use of modals. Okay. So on every tenses, on every modals, you need to do the practice on it. You should practice on every modals, every tenses. Okay. तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, 4-5 सेंटेंस बना लेने से नहीं होता है कि आप चीजों को समझ जाओगे. You will have to make more than 50 sentences, more than 100 sentences on a particular uh, uh, whatever you study. जो कुछ भी आप पर्टिकुलर पढ़ते हो ना, उस चीज पे आपको 15 and 100 सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे. अब क्या नहीं पढ़ा आपने, यूज ऑफ कैन. मैंने देखा जस्ट ओके, आपको 4-5 सेंटेंसेस बनवा दिए जाते हैं, काम खत्म. नहीं यार, काम खत्म नहीं हुआ. जस्ट यू नीड टू मेक मोर देन 50 सेंटेंसेस. मैं वहां जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर. मैं वहां नहीं जा सकता हूँ, आई कैन नॉट गो देयर. मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ, आई कैन लर्न इंग्लिश. ओके, मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता हूँ, आई कैन नॉट लर्न इंग्लिश. मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश. तो इस तरह आपको बहुत सारे सेंटेंस बनाने पड़ेंगे. देन यू कैन गेट you can become fluent in English. Okay, thank you for watching my video.